Good morning, students. So, in today's online class, we are going to talk about the last topic of life process that includes excretory system. Now, when we talk about this excretory system, basically we need to understand that it's a system or a life process that will try to eject out or excrete out all the waste that are accumulated inside the body. Now, what exactly is a waste? Waste is anything which is not being utilized, that means it is unutilized, and if it remains in the body it can behave as a toxic waste that can hamper the other different life process. So basically is needed is this toxic waste, it's needed to be removed out of the body. Now this toxic waste could be of many different types. For example, it could be in the form of carbon dioxide accumulated in the body. So this carbon dioxide, that is a respiratory gas, is removed from the body by the respiration process only, by exhalation. The excess water that is accumulated can also be coming out of the body by different process. In this topic we are going to basically talk about the excretion of nitrogen containing वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होगा और उसे निकालना ज़रूरी है बॉडी से, तो उस प्रोसेस को हम इस लाइफ प्रोसेस के टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वेयर दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड. दिस इज फ्रॉम द प्रोटीन. दैट मीन्स प्रोटीन के डाइजेशन के वक्त जब एमिनो एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है सिंपल न्यूट्रिएंट, वी आर लेफ्ट आउट विथ मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स which cannot be utilized in the body, and if it remains in the body it can cause toxic effects. Similarly, the nucleic acids, okay, the different DNA or the different RNA which cannot be digested anymore, again will be considered as a kind of nitrogen containing waste. So while this is excreted, this nitrogen containing compound is excreted from the body can as per the habitat of the organism. ठीक है, अगर जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे कंडीशन में रहता है जिसमें एक्सक्रीशन के वक्त अ लॉट ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज, दैट मीन्स काफ़ी सारा वाटर उसके सराउंडिंग में है, तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया. अगर एमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होगा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एमोनोटेलिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. सो if the nitrogen containing compound is excreted in the form of ammonia or amino acid, basically this will be known as ammonotelism. Now come to the next part. In organism where the this nitrogen containing compound is basically excreted in the form of urea, ठीक है, for example in mammals, most of the amphibians and cartilaginous fishes, this is in the nitrogen containing compound is excreted in the form of urea. Such organism will be known as ureotelism, or the process will be known as ureotelism, and the organism will be known as ureotelic. Now come to the next part. When we talk about that organism, when they are excreting out their waste product in the form of uric acid, means नाइट्रोजन तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है यूरिकोटेलिज्म, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा, यूरोकोटेलिक. अब ये जो डिफरेंस होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने का, इट डिपेंड्स हाउ मच वाटर इज सराउंडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, हाउ मच वाटर द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू कंजर्व. अगर बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है तो वो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है. इफ़ इट इज़ it will require very less water conservation, that means the organism is surrounded with water, then it is going to be excreted in the form of ammonia. If the habitat is mesophytic मतलब ना ज़्यादा वाटर है ना ज़्यादा कम वाटर है, तो वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो सकता है. ह्यूमन बींग्स में this urea type of excretion is done. Okay, now moving towards the next topic. So we have to talk about first of all a unicellular organism like amoeba. Now amoeba for excretion will be basically utilizing different process. अब उसके पास तो एक ही सेल है,
जब एक ही सेल है एंड इट इज ओवरऑल सराउंडेड बाय द एनवायरमेंट, दैट मीन्स नो स्पेशलाइज्ड excretory organs are required. Whatever undigested product will be formed will be excreted in the form of ammonia. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा यहाँ पे? एमोनिया. तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म? इट इज अ एमिनोटेलिक. तो ये जो अमीबा एमोनिया को है वो डिफ्यूज आउट कराएगा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से to the outer surrounding water. For this, they have some time also for excretion. They have a specialized vacuole which is known as contractile vacuole. Contractile vacuole का काम होगा osmo regulation का, मतलब अगर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो उस वाटर को इस contractile vacuole से उसे बाहर रिलीज करेगा. Similarly, the CO2 which is a respiratory gas which is collected during the process of respiration, it will again be excreted out of the amoeba through the cell membrane by the process of diffusion only. So in amoeba there is no specialized excretory organ. Now we will come to multicellular organism. Now for understanding a multicellular organism, first we need to know that what are the basic primary metabolites present. The basic primary metabolites includes the carbon dioxide that is released through respiration or exhalation, water जिसे स्वेट के फॉर्म में भी रिलीज कर दिया जाता है, यूरिन के फॉर्म में भी रिलीज किया जाएगा, एमोनिया जिसे कन्वर्ट पहले किया जाएगा इनटू यूरिया एंड दैट यूरिया विल बी एक्सक्रीटेड आउट by the help of in the form of urine, and different excess of mineral salts. So when we talk about the excretory organs, it may include many. We may have the human excretory system, the complete urinary system that includes kidney. We may talk about the lungs जो basically exhale out करेगा CO2. We may talk about skin जिसमें sebaceous glands है, sweat glands है जो sweat को भी release करेगा, and also liver. Okay, so all these kinds of metabolic waste are normally excreted, but here we are going to emphasize on the excretion of the nitrogenous base containing compound ammonia, which is converted into the form of urea. So let us define excretion first of all. Excretion is a biological process by which an organism get rid of excess or toxic waste प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के होते टाइम जो भी एक्सेस फॉर्म में टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा उसे रिलीज करवाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. प्लीज, एक्सक्रीशन इज नॉट इक्वल टू ईजेशन. ईजेशन हमने पढ़ा था वाइल टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो अभी तक टॉक्सिक अनडाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में रिलीज होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. बट एक्सक्रीशन में हम जो बात करेंगे, हम यूरिया के रिलीज की बात कर रहे हैं यूरिन के फॉर्म में थ्रू द यूरिनरी सिस्टम. नाउ दिस एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म which can have toxic chemicals. This will help to regulate the ionic concentration of the body fluid. It will help to regulate the water content of the body, regulate the pH of body fluid. In a way, kidney के दो फंक्शन कहे जाते हैं. किडनी का पहला फंक्शन है एक्सक्रीशन का, दूसरा जो फंक्शन है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है. सो लेट अस मूव टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now if you see here, the human excretory system is made over here. ठीक है, this is the left part and this is the right part. As you can see, there is one aorta. ठीक है, इसमें रेड कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है आपको. तो ये जो एओर्टा है, एओर्टा का जो ये ब्रांच है, दिस इज बीइंग नेम्ड एज रेनल आर्टरी. दिख रहा है आपको रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ओनली एंटरिंग इनटू दिस किडनी विच इज द रेड कलर. दिस इज द रेनल आर्टरी. दिस किडनी शेप सेल, जो किडनी जैसा शेप आपको दिख रहा है, ये क्या है? किडनी है. बाय कॉनकेव है ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो. अब यहीं से एक ब्लू कलर का ब्रांच दिख रहा है आपको. दिस इज नथिंग बट नोन एज द रेनल वेन. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनल, आर्टरी एंड वेन. आर्टरी और वेन का मतलब आपको पता है, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है. आर्टरी टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इफ यू रिमेंबर फ्रॉम देयर. बट यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड का मतलब है बेसिकली प्योर ब्लड. प्योर ब्लड का मतलब बेसिकली क्या होगा? दैट विल बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट और इम्प्योरिटी. तो रेनल मीन्स द किडनी, तो रेनल वेन यहाँ पे होगा एंड हियर इट इज रेनल आर्टरी. नाउ लेट अस कम बैक टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट. सो वन पेयर ऑफ किडनी इज देयर, यू कैन सी इसका पोजिशन थोड़ा सा हायर है
And then we have a pair of ureter, tube like structure that will be carrying the urine down. This is the urinary bladder where the urine will be collected for some time, and then through the urethra it will be excreted out. Now, if I have to explain the human excretory system, I have to start with the pair of kidneys. A pair of kidneys. The kidneys are bean-shaped structures located on either side of the backbone and are protected by the ribs and muscles of the backbone. Each human adult kidney has a length of nearly 10 to 12 centimeter and width of 5 to 7 centimeter. ठीक है. A pair of ureter will be there, which is a thin muscular tube, ठीक है, from each kidney extending from the renal pelvis, finally entering the urinary bladder. So it will be carrying the urine from the kidney to the urinary bladder. Then we have a urinary bladder. It is a sac-like structure that stores urine until micturition. Micturition का मतलब क्या है? Micturition is the expulsion of urine from the body. The urine is carried to a bladder through the ureter. Now, finally, urethra की बात चल रही है. Urethra is a tube that arises from the urinary bladder and helps to expel the urine out of the body. In males, it will act as a common route for sperm as well as urine, and that is why in males the urethra is a part of urinogenital system. Females में reproductive system से अलग होता है, so that is only a part of the human excretory system, and it is guarded by a sphincter muscle. Now, if we see the kidney structure over here, अगर मैं kidney structure को देखूँ, then you can see that pyramidal triangular structures are there. दिख रहा है आपको? इन पिरामिडल स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड. अब यहाँ पे कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन ऑफ द किडनी, मेडुलरी मतलब इंटीरियर रीजन ऑफ द किडनी. नाउ ईच सच मेडुलरी पिरामिड विल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ functional unit of the kidney which is known to be the what? It will be known to be the नेफ्रॉन. जो इसके अंदर किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन होता है उसे क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन. सो वी कैन से द किडनी हैव एन इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर. देखिए कॉन्केव जैसा स्ट्रक्चर है. एट द सेंटर देयर इज अ नॉच कॉल्ड हिलम. यहाँ पे जो नॉच आएगा जहाँ से अटैचमेंट हो रही है इसे क्या बोला जाएगा? हिलम बोला जाएगा, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व सारे किडनी में एंटर करते हैं. Towards the inners of the hilum there is a large funnel shape called renal pelvis. जहाँ इंटीरियर पार्ट में renal pelvis ये funnel shaped structure है जो कलेक्ट कर रहा है यहाँ से. Can you see that? And from here only ureter will start. So now we are going to talk about the basic structure of nephron. So nephron, if you only talk about the filtration unit or the functional unit of kidney, these are the nephron, which you can see is a very coiled structure. And millions of nephron can be present in one medullary kidney. ठीक है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी नेफ्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन वन पर्टिकुलर किडनी. सो अगर आप देखें इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आगे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.